today's discussion is what is the role of parents in stopping bullying. As we all know, bullying is something that's faced by everyone once in our lifetime. I must have faced it, ma'am, you must have faced it. So do you have any experience of your childhood or adulthood where you have been facing bullying? Thank you, Kavya, for inviting me on this panel for a discussion on such an important topic. It's actually very close to my heart when I think about bullying. And that was one of the reasons which made me commit to your program today. If I look at my childhood days, to be honest, I don't have a memory of school. But yes, definitely now I remember persistent nicknaming related to my body weight, related to my physique, which I could not stop. And it continued, made me feel very small and very helpless at times. I never knew that was bullying, but greater I studied about it in my college days, I started realizing, yes, it was bullying, which happened more at home with my friends, with my extended families. If you are willing to take it up as part of bullying, yes, school was pleasant, but apart from school, there were certain experiences which leave me scarred till date. Yeah, I totally agree with the fact that once you're bullied, either it's in the adulthood or the childhood, there's certain scars that are left on your heart and your body. So I think just calling names is very small for somebody in the classroom, but the person who's been called up is something very huge. Just calling you thin or fat, because I know I'm a very thin child since always. So I've been called like you're so thin or anything. It did not scar me a lot, but at that particular time when I was a child or something, I could feel it. So I think just a small amount of things that around in life somehow puts an effort to the heart. So what do you think? What is the way that a person can stop feeling that? What is the way that the person should feel himself, make himself comfortable about the fact that even if he's bullied, he should not think about it? Stopping bullying, preventing oneself from bullying is one very powerful task to be taken up. And damage control after the bullying is another very responsible, sensitive task to be taken up. So, two aspects of understanding and managing bullying experiences. Then something has to happen within the inside the person, and something has to happen outside the person. But as we say, all real answers lie within us. So something definitely has to happen within the person. So whosoever the individual is, first thing which one needs to understand is, how do I view myself? How, what do I think of myself? How do I like myself? My self concept, my self esteem, my self confidence. So if these things are stressed upon in an individual, that I accept myself, whether I'm big or small, short or thin, fat or lean, whether I am black or brown or white or gray, it everything is beautiful. Everyone is beautiful. Everyone is different. So if these kind of sentiments are nurtured within us, so each one of us is responsible to nurture ourselves in this way. We are fortunate if we get the help of the support system in terms of a loving, supportive family, loving, supportive environment at school. पर अगर नहीं भी मिलता तो हम अकेले काफी हैं अपना ख्याल रखने के लिए, अपने आप को संभाल के रखने के लिए और अपने आप को वैल्यूएबल महसूस करने के लिए. Exactly. So मैम, जैसे आप you said, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, बट व्हाट इफ आपके पेरेंट्स आपको बुली कर रहे हैं? हाँ, मजेदार बात यह है कि पेरेंट्स अक्सर बुली करते हैं लेकिन कभी मानते नहीं. एग्जैक्टली मैम, है ना? वो तो उनका प्यार होता है, वो तो उनका लाड होता है. That's what the parents say. Oh, I never knew he will not like it. Oh, he's been holding it back for years together. As a therapist, I get to hear this from parents. If at all an adult client of mine talks about what happened during his childhood, मुझे इस तरीके से कह के हमेशा प्रताड़ित किया जाता था.
especially the young girls with little dusky complexions. I remember my own friend. She used to say that I hate to get married because I don't want to give this pleasure to my parents because they've always been worried of my marriage because I have a dark complexion. I remember in our college she used to say मेरी शादी कभी ना हो, मैं ये खुशी अपने मम्मी पापा को देना ही नहीं चाहती, because all through her school days she got to hear इसकी शादी कैसे करोगे तुम लोग, इसकी शादी कैसे करोगे तुम लोग, और मम्मी पापा भी उसके कहते थे बड़ा मुश्किल है इसकी शादी करना, पता नहीं कैसे सब कुछ ठीक होगा इसकी लाइफ में. So she always get to say कि इसका रंग क्यों ऐसा है. So this is one small example which I'm sharing, Kavya, but it is not only an indirect. See, it can be indirect like this. It can be straight. Motu, Chotu, Golu, Polu, Rolu, Humpty, Dumpty. ये सब क्या है? Names ही हैं. Names है और जो कहीं ना कहीं बड़े जोर के लगते हैं. ये छोटा सा झटका बड़ी जोर के लगता है बच्चों को. And with this platform, on this platform of yours, I really want parents to listen to me कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई. Exactly. और आई थिंक कि व्हेन अ चाइल्ड, आई थिंक मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस उसके लिए उसके पेरेंट्स होते हैं. द आउटर वर्ल्ड इज वेरी मीन एंड हार्श टू द चाइल्ड, एंड द ओनली सेफ एनवायरनमेंट फॉर अ चाइल्ड इज द पेरेंट. Yes. And even if they do the same thing to the child, I think so the scar that he or she will have by being bullied by his own parents will be more than any other thing, I believe. Undoubtedly, sis, I would say if Priyanka Chopra was very fortunate that she had such a supportive mother. At 16, when she was bullied in America, जब वो पढ़ने के लिए अपनी aunt के पास गई थी, she has mentioned this in her memoir, Unfinished. She says, at 16, I had gone to States to stay with my aunt and study in a school where, because of her brown complexion, she was being teased and bullied and harassed, and she couldn't take it anymore. So she called up her mother, and the mother came running to her, and mother brought her back. So इस तरह का अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एक पेरेंट अपने बच्चों को दे सकते हैं हर उम्र में, लाइफ की हर स्टेज पे. अगर बच्चों को ये पता हो कि दे कैन जस्ट टर्न अराउंड एंड मॉम इज देयर, डैड इज देयर, हम जो भी कहेंगे वो बिना किसी सवाल के समझा जाएगा, माना जाएगा, उस पर रिएक्शंस, उस पर रिस्पॉन्सेज आएंगे पेरेंट्स के, मगर प्यार के. कहीं ना कहीं सी वी नीड टू बिल्ड अपॉन आवर चिल्ड्रन ऑल्सो. पेरेंट्स ये प्रिटेक्स्ट लेते हैं कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना है, सो बच्चों को इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना आना चाहिए. बट द पेरेंट हैज टू बी सेंसिटिव एंड वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि कब ये बियॉन्ड टॉलरेंस जा रहा है. कभी कभार की टीजिंग्स को रब ऑफ करना बच्चों को आना चाहिए. डिफरेंट एंड डिफिकल्ट रिस्पॉन्सेज लोगों से सुनने और उनको डील करना आना चाहिए. बट डे इन एंड आउट अगर बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है, छोटा बनाया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, इट्स अ ह्यूज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. बच्चा, I'm just unquoting what Priyanka Chopra mentioned in her memoir. I wanted to be invisible. I just didn't want to be seen anywhere. मैं कहीं छुप जाऊं जाके. और कहते हैं ना कि सैडनेस इज सेडक्टिव, इट सक्स. आप अपनी तन्हाई में, आप अपनी गुमनामी में बैठे रहना चाहते हो, आप अपनी पूरी काबिलियतें पर यकीन नहीं कर पाते हो, यू लूज द कॉन्फिडेंस. सो पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते. द चाइल्ड इज not the way the world is wanting the child to be, but the child is still so beautiful and the child is still so lovable for parents. This is what the child should get to hear from parents at every stage. Exactly, ma'am. And I strongly believe that no matter what, the parents need to uplift the child, whatever the scenario is or whatever the child is like. Yeah. And moving on to my next question. Do you believe that it's just not parents, even sometimes a child could also bully their own parents? Do you believe that? Yes, definitely child can bully the parents. See, it is actually a power game. Which side will project themselves as more powerful and which side becomes powerless because they are not able to counter that power. So at times if the parenting is a slightly I would say a passive parenting, not very authoritative or assertive parenting, थोड़ा सा laissez-faire style आ जाता है, थोड़ा सा democratic parenting के नाम पर अगर हम बहुत ज्यादा let go कर देते हैं, then children do not know
where to draw lines. Children are unable to maintain the boundaries, so children at times start governing the parents. जो आज, I'm sure if we have some parents around, they will agree with me. The child says, "Mom, you don't know. आप छोड़ो, मैं कर लूंगा. आपको नहीं पता, मुझे पता है." And when as parents, if we wish to seek any advice and guidance in the context of technology, we prove ourselves to be helpless and clueless and ignorance, and the parents and the children govern us. घर में कोई गाड़ी आनी है, घर में कोई मोबाइल आना है, कौन डिसाइड करता है? काव्या, I'm sure in your house also you will be guiding your mom, please buy this phone, isn't it? Yeah, it is. So these at times they are very harmless things, but when they become harmful, we do not know. सो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा. एज पेरेंट्स ऑल्सो वी शुड टेक द हेल्प ऑफ आवर चिल्ड्रन, बट हु विल डिसाइड व्हाट, व्हेन, हाउ? बच्चों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती, लेकिन बच्चे उस डोमेन में घुसते हैं, बात करते हैं, वो भी नुकसानदेह हो सकता है. सो पेरेंट्स कैसे बाउंड्रीज लगाएंगे, पेरेंट्स कैसे एक बैलेंसिंग लाएंगे, involving the children, teaming up with children, seeking children's advice, but then having some kind of control or a last word in the conversation. I even strongly believe this कि balance is very important. चाहे वो parenting हो या कोई भी out in every aspect of life, maintaining the balance is very important. If balance goes away, it's going to always create some or the other problem coming up. So moving on to my next question, what is the key advice that you would like to give to parents in stopping bullying? My only advice, I think, should be that parents should first make the child understand what is bullying and what is not bullying. They should help the child recognize when they are being bullied. So understanding of the word bullying should be there. Little features of this experience, a traumatic experience, should already be known to the child. हमें पहले से बच्चों के साथ इस बारे में बातचीत करनी होगी, बच्चों को प्रिपेयर्ड रखना होगा. बिल्कुल वैसे जैसे हम कहते हैं the young girls need to be pre-informed about pubertal changes. So उसी तरीके से बुलिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं प्लेग्राउंड में, स्कूल में, क्लास के अंदर, ट्यूशन क्लास में, मार्केट में, कहीं पर भी. सो वो इम्बैलेंस्ड पावर का डिस्प्ले के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए. टाइप्स ऑफ बुलिंग के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए कि फिजिकल बुलिंग नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको आपके साइबर स्पेस में भी कोई तंग कर रहा है तो वो भी बुलिंग है. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स आवर चिल्ड्रन आर इग्नोरेंट about naming the experience which they are going through, though they are being disturbed because of that experience. Then giving them the reassurance, making them have that faith and trust in the children, कि बच्चे अपने मम्मी पापा पर यकीन कर सके, बच्चों को ये इत्मीनान तो हो कि वो कुछ भी हो जाएगा, they can come back and speak with their parents. So एक unconditional acceptance and unconditional positive regard. So messages like they should never be ashamed, they should never be afraid. एक fearless, spontaneous, natural, responsible parenting parents का बहुत बड़ा रोल रहेगा. और उसके साथ साथ empathetic, compassionate conversations. We are to prepare our child how to handle bullying. और कुछ बच्चे हमारे बुली बन जाते हैं, वो दूसरों को बुलिंग करते हैं. तो एज पेरेंट्स वी विल हैव अ रोल टू प्ले कि हम अपने बच्चों के सामने कैसे पॉजिटिव रोल मॉडल्स एग्जिबिट करते, कैसे हम रॉन्ग पावर डिस्प्ले नहीं करते, कैसे हम एग्रेसिव वायलेंट पेरेंटिंग नहीं करते, जहां पर बच्चों को मम्मी पापा से मार पड़ जाती है. तो बच्चों को क्या लगता है कि शी इज पावरफुल, डैड इज पावरफुल, सो डैड कैन डिस्प्ले पावर एंड आई एम स्मॉलर टू हिम, आई एम हेल्पलेस, पावरलेस, सो आई विल बी एट द रिसीविंग एंड आई विल टेक ऑल द हर्ट एंड पेन.
He's not able to retaliate to the father, but he holds it inside. And this young child, 4, 5, 6, 8 years old, will grow up to become a bully. वो Exactly. क्लास में जाके बुली करेगा, शायद प्लेग्राउंड में करेगा, बाहर कहीं करेगा. So parents have to be very, very careful in upbringing their children. In role, they have a role to play in role modeling. Their conversations should not be abusive. So, and the games they play, बच्चे अपने खिलौनों को पटकते हैं, फेंकते हैं, उठाते नहीं है, तोड़ते हैं. Children like to stamp their feet on the floor, make noise. Ants को crush करते हैं. Animals के साथ थोड़ी सी cruelty, brutality in terms of, in the garb of enjoyment. अगर I've seen zoo में animals, जब हम बच्चों को zoo ले जाते हैं, the way the children interact with the animals in the zoo and the parents are silent spectators, उनको टीज करते हैं, कुछ खाने के लिए देते हैं और फिर छीन लेते हैं, फोटो खींचते हैं, एनिमल को अपने पास बुलाते हैं और उसकी टेल को पुल करते हैं, फोटोग्राफ्स खींच खींच के दैट स्क्रीन, वो जो लाइट का, जो फ्लैश का जो एक्सपीरियंस है, वो एनिमल्स को डिस्टर्ब करता है. बट चिल्ड्रन आर क्लूलेस, चिल्ड्रन आर जस्ट इग्नोरेंट ऑफ दिस एंड पेरेंट्स कीप इनकरेजिंग. दिस इज समथिंग विच आई विटनेस्ड एंड आई फेल्ट कि ये बच्चा आज एक एनिमल के कंफर्ट और डिस्कंफर्ट को नहीं समझ पा रहा, एंड द पेरेंट इज गिविंग द लिबर्टी टू द चाइल्ड, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट द चाइल्ड इज इंडल्जिंग इन दिस. Tomorrow the child is going to do this with human beings. Exactly. If he is not even respecting animals, he will never learn to respect Yeah. them. Exactly. So I think even parents का बहुत mainly role है इसमें, and just to making the child a bully, because if in the growing years they inculcate the factor of teaching them that you shouldn't bully anybody and you shouldn't get bullied, he will learn it and he will make sure that he doesn't repeat it. Certainly. So, yeah, and if I feel, and it's a very common question that mostly parents have, how can they identify the fact that their child is suffering from bullying? Because they cannot go to school every day, they don't know what's happening in the class or tuition or whatever the environment the child is. What is the key ways that the parent can know if my child is being bullied or not? Being a parent myself and a parenting coach for a lot of couples, I've realized कि अगर हम बच्चों को सिर्फ आंखों से नहीं, लेकिन अगर दिल की आंखों से भी देखते हैं और दिल से सुनते हैं, तो वी कैन सर्टेनली आइडेंटिफाई सर्टेन फ्लैग साइंस इन आवर चाइल्ड. बच्चे की मुस्कुराहट है कि नहीं है, द चाइल्ड इज फीलिंग प्लेजेंट एंड हैप्पी, द चाइल्ड इज लाइक द ओल्ड केयरफ्री चाइल्ड, या बच्चे में कुछ चेंज हमें नजर आता है. द चाइल्ड इज हेजिटेंट टू गो टू स्कूल और टू द प्लेग्राउंड, द चाइल्ड हैज सर्टेन नाइटमेयर्स, the child is little restless in his sleep, the child is clinging to the parent. Age group के हिसाब से बच्चों के flag signs भी बदल जाएंगे. There are certain injury marks on his body, his clothes are torn, he's hurt somewhere, there are some bleeding stains in on his body, कपड़ों पर, कहीं पर. The child's friends are trying to approach and tell you something. The child is scribbling something on his diary. The child has started writing a diary, is making notes somewhere. The child is frequently complaining of headache or stomach ache. बहुत सारे ऐसे symptoms हैं. बच्चे रोने ज्यादा लग गए. Lot of children indulge into lot of substance abuse if they have been bullied at times, because they don't know how to handle fear. There can be something that the child wants to speak, but the child is unable to speak. कभी कभी वो भी नजर में आएगा. The grades of this child starts falling. Foul language का इस्तेमाल करने लग गया child. The child is avoiding certain friends. बच्चे को भूख ज्यादा लग रही है या बिल्कुल नहीं लग रही है, नींद ज्यादा आ रही है या नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है. All these factors, all these changes will certainly make the parent realize that there is something wrong somewhere. The parent has to be more observant, the parent has to be more warm and supportive. The parent doesn't have to be uncomfortable in probing, but the parent has to encourage the child to engage in a conversation. Parent has to help the child to communicate.
what is bothering. ये कहना बहुत आसान है, ये सुनना बहुत very आसान है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो देना मेरा साथ या मैं दूंगा तुम्हारा साथ, लेकिन उसका एहसास दिलाना, उस इस बात को जीना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। जीना किसी के साथ इस एहसास को दिलाते हुए, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वी कैन. So the parents will have to be very observant about these flag signs, and then they will have to try and make few baby steps. And if they are unable to, then they can seek help of mental health professionals like us. I would say that. And आपने just बोला ना कि if there's body scars or anything, but what if there's no scars on the body, no friends knowing the fact, because the child doesn't have any friends. Huh. So all he is getting bullied, and just by the name calling thing, then what? How can you identify that factor when the friends are not अब taking? नेम कॉलिंग जो हो रही है तो वो उदास है ना. द चाइल्ड वुड बी सैड, द चाइल्ड वुड बी लिटिल क्रैंकी, रोएगा अकेले में. उनकी ड्राइंग्स बता देती हैं, उनकी स्क्रिबलिंग्स बता देती हैं, मूडी हो गए, खाना नहीं खाना चाहते, टची हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं किसी चीज के लिए. सो ये चेंजेस जो हैं उनके बिहेवियर पैटर्न्स में, इसके लिए ऑब्जर्वेंट होना बहुत जरूरी है. एज काव्या आई सेड कि बच्चों को आंखों से नहीं दिल से देखना और दिल से सुनना पड़ता है, तब हम बच्चों के इन चेंजेस को, फॉर दैट मैटर बच्चे भी नहीं, एडल्ट्स के भी. आई वर्क इन अवर टीम, वी हैव पीपल अराउंड अस. हमारी मुस्कुराहट रोज जैसी नहीं है. गुड मॉर्निंग का जवाब जरूर आया, लेकिन वो गुड मॉर्निंग में गुड की फीलिंग उस चेहरे से नहीं आई, तो हम क्यों नहीं एक दूसरे से पूछेंगे. वो कहते ना, रिश्ते में गर्माहट तो खो गई जब उन्होंने पूछा कैसे हो और मैंने कहा ठीक हूं. सो वो ठीक हूं सिर्फ लफ्जों से कहा गया या दिल से कहा गया जो चेहरे पे दिखा. और मम्मी पापा से बढ़ के तो ये कोई चीज पढ़ ही नहीं सकता. गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स भी बाद में आते हैं. बिल्कुल ठीक कहा आपने. आई थिंक कि कम्युनिकेशन, आपने जैसे बोला ना कि बोलना बहुत आसान है और कम्युनिकेशन रखना, तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को कि वो हेल्थी कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाए, क्योंकि कई बार बच्चे बात नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो क्या बच्चे बात क्यों नहीं करना चाहते? क्या हम बड़ों को बच्चों से बात करनी आती है? हम क्या अपने पेडेस्टल पे बैठ के उनसे बात करेंगे कि बच्चे हमारा ज्ञान लेते चले जाएं? नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस. या हम हर वक्त उनको डूज और डोंट्स भी देते चले जाएंगे. आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि भैया कुछ टीचेबल मोमेंट्स होते हैं, कुछ टॉकेबल मोमेंट्स होते हैं. तो सिर्फ टॉकेबल मोमेंट पे टॉक कीजिए ना, उस टॉक में थोड़ी सी गाइडेंस मत डालिए. और जब बच्चे हमें कोई बात बताने लगते हैं, वी शुड नॉट बी जजमेंटल. ओ माय चाइल्ड थिंक्स लाइक दिस, ओ हिज फ्रेंड्स टॉक लाइक दिस, ये भगवान इसकी कंपनी कैसी है, शुक्र है आज मुझे पता चल गया. सो द इन्वेस्टिगेटिव माइंड ऑफ द पेरेंट, हम पेरेंट्स हैं, शर्लॉक होम्स बनना बंद करें प्लीज. एंड कई बार होता है, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है, पहले मेरे दिमाग में 10 बार आएगा कि शुड आई टेल इट, और व्हाट इज द रेप्लिकेशन, उसका क्या होगा, विल दे एक्सप्रेस इट इन अ गुड वे और एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. तो आई थिंक आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल जर्नी एज अ स्कूल काउंसलर, एंड वो पहला स्कूल जिसमें मैंने अब जॉब की, सो वहां बच्चे मुझे यही कहा करते थे, चिल्ड्रन ऑफ क्लास 10th 11th एंड 12th, आपको बताना आसान है, घर में बताने का मतलब ये है पंडारा बॉक्स खोल दो. पहले कब हुआ, अच्छा तुम कब से इसके बारे में सोच रहे थे, अच्छा तुम्हारे फ्रेंड ने पहले कब ये किया, कब वो किया, अरे एक बार बियर पी ली इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं शराबी बन जाऊंगा. दैट्स व्हाट चिल्ड्रन यूज्ड टू से. सो I understand as a parent myself that the parental instinct wants us to be protective about our children, but the children will lead their lives. Children will want to try and experiment. We can just inform them. तो हम बच्चों को इतना टाइटली भी ना कर दें कि वो कॉन्वर्सेशन ही ना कर पाए, क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम वर्डिक्ट देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तुमने आज एक बार किया तुम हमेशा करोगे, और जाओ उसकी कंपनी में. अब ऐसी बातों के बाद बच्चे हमसे बात कब करेंगे? कभी भी नहीं करना चाहेंगे. सो मील टाइम्स शुड बी विदाउट सच sermons एंड लेक्चर्स. पढ़ाई की बातें हर वक्त मत करें. जब बच्चे आपसे कुछ डिमांड करें, कुछ लेना चाहते हैं, उसको उनके मार्क्स के साथ, उसको उनके पास बिहेवियर के साथ लिंक करना बंद कर दें, क्योंकि बच्चे नहीं तो बात करना बंद कर देंगे. एंड can we just be patient and listen? Can we just try and be more empathetic?
Can we just switch our shoes and get into their shoes and see कि teenage crisis क्या होते हैं, teenage conflicts क्या होते हैं? मुझे पता था कि मुझे नहीं जाना उनके साथ मम्मा, बट फिर भी मैं चला गया. I couldn't say no. अब यहाँ पे मम्मा का लेक्चर शुरू हो जाएगा या मदर विल रियलाइज ओ माय चाइल्ड इज अनेबल टू हैंडल पीयर प्रेशर. तो इसका मतलब मुझे इसको पीयर प्रेशर को कैसे मैनेज करना है ये सिखाना है, ये नहीं कि लेक्चर देते चले जाना है, जो मैंने भी शायद कभी कभी दिया है. आई थिंक वो पेरेंट्स का थोड़ा राइट है ना कि थोड़ा लेक्चर, बट आई थिंक जब तक वो एक बैलेंस और एक मॉडरेटेड वे में है हाँ, तब तक ठीक है. बट अगर आई नो ऑल एटीट्यूड पेरेंट का नहीं हो सकता. पेरेंट्स हैव टू इम्प्रूव देयर लिसनिंग स्किल्स. या एंड हर चीज में कंपैरिजन भी आई थिंक सो ना थोड़ा पेरेंट्स को कम करना चाहिए, आई थिंक सो. अच्छी है. And do you think कि even when you have parents and you have all siblings, and do you think parents compare you to your sibling, it is some kind of bullying to the child? When there's a Yes, comparison? yes. Parents think that's how they motivate the child. That's how they keep encourage the child to well and good in life. But personally, I also never felt motivated when my mother used to compare me with her friends' daughters. Yeah. तो एक कभी भी मोटिवेशन नहीं मिली थी. और सिबलिंग, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ सिबलिंग्स unable to develop a healthy sibling relationship because बचपन से ये चीजें सीमेंट हो गई. She is better, my sister is better than me in this, my sister is more sensitive and helpful and forthcoming than me. जब मैं हूं ही नहीं तो मैं बन भी नहीं सकती हूँ, तो फिर मुझे ट्राई भी क्यों करना है. Lot of personalities did not unfold the way they should have been because of such comparisons done by the parents ignorantly, I would say. या क्योंकि उनके लिए बहुत बेसिक सा सेंटेंस है कि योर सिस्टर इज बेटर, योर ब्रदर इज, बट आई थिंक Yeah. for the child he starts comparing to the sibling and he becomes competitive about the fact that if there is something is happening in the house he gets competitive. At times, Kaga, it is so unrealistic. Imagine a 12-year-old child listening. तुम्हारी 7 साल की बहन आराम से सुन सकती, तो तुम क्यों नहीं सुन सकते? अब भैया 7 साल की बहन अभी टीनेज गशेस को, हार्मोनल चेंजेस को नहीं एक्सपीरियंस कर रही. वो 12 साल का बच्चा अपने हार्मोनल चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो हुए माई से जूझ रहा है, तो वो कैसे आराम से मम्मी की बात सुन सकता है? वो कितनी लविंग और अफेक्शनेट है और तुम कितने राउडी हो. एग्जैक्टली. सो उसको कभी नहीं अच्छी लगेगी वो बहन अपनी फिर. और तो लगता है कि कभी भी एक हेल्दी, हाँ, क्योंकि उसको लगेगा अदर इज नाइस एंड आई एम सफरिंग ऑन द फैक्ट. सो मैम, am I audible to you? Yeah, I lost you for a second. Yeah, am I back? I think so. There Yes. was a certain Yeah, yeah. technical. I was saying that I think एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उस कंपैरिजन के थ्रू पेरेंट्स Yeah. अपना तो एंगर भी निकालते हैं और बच्चों को से कंपेयर करते हैं, और रिलेशनशिप भी डेवलप होने से पहले ही खराब कर खराब हो जाएगा, undoubtedly. और audible all Yeah, fine. yeah. I think that's some technical glitch. Yeah. So let's move on to question. So parents are, yeah, ma'am, yeah, now I can see you. See me? I think your screen is off now. Please turn it on once. Yeah. Yeah, you're back. Yeah, dear, tell me. So let's move forward, ma'am. जी. हमारे नेटवर्क ठीक है. So my next question to you is, ma'am, even I can parents and more time, ma'am, आपका नेटवर्क ठीक है, I can hear you, आप क्लियर हो. जी. एक सेकंड.
Ma'am, I'm back. All fine? All right, Kavya, tell me, dear. Yeah. So my question to you is: even Mhm. teachers are considered as second parents, and a child spends the most amount of time in school in the Mm. daytime. And Mm. do you feel that somehow a teacher can also bully the child? Yeah, certainly, yeah. Sorry, I'm being well. Certainly, teachers also unknowingly, unconsciously do bully the children by calling them with a lot of nicknames, by scolding them publicly at times, by rebuking them. I'm not trying to paint the teachers as villains, but somewhere the teachers are unable to विजुलाइज कि उनकी एक बात का क्या असर होगा. अब बच्चे ने कोई एक्सप्लेनेशन दी है, टीचर उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन टीचर उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या जवाब देती है, वो बहुत तय करेगा कि बच्चा बुलीड फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा है. एट टाइम्स चिल्ड्रन मस्टर देयर करेज, वॉक अप टू द टीचर टू टेल देम कि मैम प्लीज यू गिव मी दिस lunch duty and I'm unable to perform this lunch duty because these two boys come and they bother me like anything. अब वो ये बात कहने की कोशिश करता है in his own way, but the teacher doesn't have the patience to wait for him to complete his sentences, to listen to him, to realize how helpless he feels and how much he's trying to overcome that kind of a struggle. But the teacher labels him in a way कि आप कोई काम कर ही नहीं सकते, आपसे होगा नहीं कभी भी. There are a lot of instances where the teachers have misunderstood the child, teachers have misinterpreted the child's conversations. The teachers have displayed power in a manner to the child that the teacher becomes unapproachable to the child. Child will that is why a lot of bullying incidents are never reported to the teachers but to the parents, to the mothers. Yeah, because first of all, the teacher will go to the mother because she needs to understand first, then only she can go to the mother. Yes. So, but if she's the one who's bullying the child and she won't never understand the fact that she's the one who's bullying the child, and just saying the child, giving marks to the child and calling it out in front of the class is something that can harm the child. Certain prefixes and suffixes which the teachers generally attach in their conversations with children, that's in a way bullying the child. Exactly. I think in the Indian education system, this is the one big problem that we have, marks race. And when we see the report card game and everything, I feel the child is humiliated somehow. Yeah. Everybody is not the one who can get A plus, and everybody cannot score bad. So I think everybody needs to be treated equal, even no matter how bad or how good he's performing in the class. I think so. It's not in the child's hand sometimes. It's just the way he is being, and it's the way he's going to perform. Somewhere the way the teachers talk, it conveys the lack of trust which the teacher has for the child. That when the teacher doubts what the child is telling, the explanations which the child is offering, the teacher is unable to believe them. The teachers cross question them. It at times it is not the choice of the word, it is the tonality of the words, how the teacher is talking, her own personality, the way she talks, the way she stands, the way she looks at the child. All these things can be small facets of that bullying experience, which is so traumatic for the child. Exactly. And do you believe there's some sort of favoritism also can affect the child? Because sometimes the scholars or the ones, the toppers of the class are being given a certain favoritism corner, and the Yeah, child yeah, feels yeah. like, That's there in the house also when I you am have two being or three compared to children. that person. Yeah, so it's alike at school, at home, and a lot of children say, "Ki, I wanted to be in the competition. I wanted to be participate. I did try, but the ma'am said, but the teacher had already made up her mind. So the trials did were not fair. Up teachers, a lot of educators are not going to like me talking all this, I'm sure, but this Exactly. is a harsh fact. This is a bitter reality. सो कोई उन बच्चों के दिल से पूछे ना जो तैयारी करके It जाते happens. हैं, जो बड़ी फेयरनेस के साथ करना चाहते हैं. काव्या, वी हार्डली हैव दोस टीचर्स जो एक बच्चे को जो स्टटर करता है उसको भी कहती हैं कि तुम ऑडिशन के लिए आओ, और वो बच्चा ऑडिशन के लिए सारी रात तैयारी करता है, अपनी रिहर्स करता है लाइव और जाता है सुबह. And the mother is so skeptical and so worried, but the child comes back home happily because the teacher has boosted his esteem by saying, I've selected you to be a cheerleader.
When they perform, you need to cheer, because if you don't cheer, they will not be able to perform so well. So that's how the tables can be turned so positively. An educator can actually touch the hearts and make a difference. Yeah, because I agree, if the five people are auditioning, all five cannot be selected, but we cannot, we are putting one person's morale up and we cannot put them down just because they are not selected. There's some way we need to uplift them. And the way you said that you are the cheerleader is a very positive aspect to that. Yeah. Exactly. And So this is something I haven't heard much. And it is something that everybody needs to say. सो ऑल इंक्लूसिव क्लाइमेट बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम दिल से सोचें, दिल से महसूस करें चीजों को, और दिल से कहें, बोले, सुने. Yeah, because the teacher needs to understand, because she's a second parent to the child. And that second parent needs to uplift the role and needs to understand what the child needs. Yeah. So thank you so much. We are so delighted. Soul is so delighted to have you. And everybody in our team is so happy to have you. And all the words that you said is something that I would cherish for life. Thank you. Pleasure is all mine. Looking forward to many more of such interactions. Thank you so much. Thank you, ma'am. Have a great day. Thank you. Bye-bye. So we'll be seeing you with the next session very soon. And we are signing off with Geetangli ma'am. Thank you so much for being here.